So, welcome to another video of Chemistry Chapter 2. So, this is the beginning of Chapter 2 Chemistry, that is matter around us pure? हमारे आसपास जितनी भी मैटर है, जितनी भी सब्सटेंस है, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या तो वो लिक्विड हो सकते हैं, या तो वो गैस हो सकते हैं. Now the question arises: they are these substances or these matters pure or impure? Okay, so we know that matter is matter on the basis of physical properties. Physical properties on the basis of physical properties, it is categorized or classified and in three groups, that is solids, liquids and gases. And we discussed about the solid, liquid and gases in the previous chapter, but in this chapter we are going to discuss matter, the classifications of matter on the basis of chemical properties. So on the basis of chemical properties, matter can be classified into pure and impure. Okay, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम दो टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक है प्योर, दूसरा है इम्प्योर. सो मैटर this is matter. Now it can be classified into two broad divisions. One, pure matter. Second, impure matter. Now pure matter are those which we have talked about, or we have discussed about in chapter 3, that is atoms and molecules. Okay, that is metals, non-metals and metalloids, not in atoms and molecules but in class 8 chapter metals and non-metals. Okay, क्लास 8 के चैप्टर में हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. ठीक है, वो प्योर मैटर के डिवीजन में है. तो प्योर मैटर को फिर से क्लासीफाई किया गया है टू ब्रॉड डिविजन्स में. नंबर वन इज एलिमेंट्स, and number 2 is compounds. Okay, and again elements are subdivided into three categories. Number 1 is metals, number 2 is non-metals, number third is metalloids. ओके, तो मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके मैटर के टू टाइप्स हैं. नंबर 1 इज प्योर मैटर, नंबर 2 इज इम्प्योर मैटर.
अभी प्योर मैटर को फिर से सब डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। ओके, क्या क्या? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में एलिमेंट को फिर से सब डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। सिमिलरली कंपाउंड्स को भी सब डिवाइड किया गया है into two groups, and that is number one is organic compound, another is inorganic compounds. ओके, और जो फिजिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम और भी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यही सब डिविजन्स हमें पढ़ने होंगे और डिस्कस करने होंगे। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं इसको लिख ही देता हूँ, फिजिकल कंपाउंड्स को भी इंक्लूड कर देता हूँ। सॉरी, ये फिजिकल नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, मैं गलत बोल रहा था। इट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो प्योर मैटर का दो क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी इम्प्योर में क्या है? इम्प्योर का सिर्फ एक ही डिवीजन है, वो है मिक्सचर्स। इम्प्योर की कैटेगरी में सिर्फ एक ही आता है, वो है मिक्सचर्स। Okay, now mixtures are subdivided into two parts or into two types. One is homogeneous, another is heterogeneous. ओके, तो मैटर के क्लासिफिकेशन को हमने देख लिया। नाउ ईच क्लासिफिकेशन के डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस मीन्स प्योर मैटर। प्योर मैटर और सब्सटेंस। तो प्योर मैटर का या फिर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस which is made which is made up of which is made up of many sorry of only which is made up of only one kind of matter, only one kind of particles, and that can't be broken down into simpler forms are called pure matter. Is called pure matter. ओके, तो प्योर मैटर का डिफिनेशन है कि जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल से बने हुए होते हैं और जिनको हम छोटे फॉर्म्स में तोड़ नहीं सकते या फिर डिवाइड और नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं प्योर मैटर। ओके, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होंगे और जिसे हम और सिंपलर फॉर्म्स में डिवाइड या फिर ब्रोक नहीं कर सकते। नाउ इम्प्योर
सब्सटेंस और इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, तो इम्प्योर मैटर का डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस that is made up of two or more kinds of particles, kinds of matter, and which can be isolated into simpler forms is called impure matter। तो इम्प्योर मैटर मतलब जो सब्सटेंस दो या फिर दो से अधिक मतलब मैटर से बने होते हैं। मैटर मतलब इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड या फिर गैस। एक्चुअली यहाँ पर पार्टिकल से होगा क्योंकि मैटर तो हो ही नहीं सकते यहाँ पर। ओके, तो substance that is made up of two or more kinds of particles and which can be isolated into simpler forms is called impure matter। मतलब दो या फिर दो से अधिक पार्टिकल से बने होते हैं और जिनको हम सिंपलर फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मीन्स वी कैन कन्वर्ट और यू कैन से ब्रोक। नाउ एलिमेंट्स, what are elements? एलिमेंट्स टर्म से हम बहुत ही बखूबी फेमिलियर है। तो एलिमेंट्स मीन्स ए प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट ए प्योर सब्सटेंस और ए प्योर मैटर that can neither be broken down into simpler substances nor formed from two or more simpler substances। For example, nitrogen, calcium, potassium, phosphorus, sulfur, magnesium, carbon, sodium, manganese, arsenic, germanium, tellurium और कुछ है बोरॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। तो इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब है एक प्योर सब्सटेंस, फिर प्योर मैटर होगा जो जिसे ना तो हम छोटे मतलब सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन कर पाएंगे या ना ही ये किसी दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस से बने होते हैं। ओके, तो एक प्योर सब्सटेंस जिसे हम ना ही
सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होगा, और ना ही ये किसी दो या फिर दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस से बना हुआ है। इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैंगनीज, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम, बोरॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। तो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। अभी एलिमेंट के सब डिविजन्स जो है, अच्छा अभी एलिमेंट के बाद क्या था? कॉम्पाउंड। नाउ कॉम्पाउंड, compound compound is also a pure substance that is made up of two or more different elements combined together in a definite ratio by mass। तो कॉम्पाउंड्स जो है वो एक्चुअली क्या है? प्योर सब्सटेंसेस ही है, मतलब प्योर मैटर ही है एक्चुअली। इसको प्योर मैटर लिख देता हूँ। प्योर मैटर that is made up of two or more different elements combined together in a definite ratio by mass। So what does it mean? It means that कि प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड एक प्योर मैटर या फिर सब्सटेंस है जो कि दो या फिर दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए हैं। सेम एलिमेंट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स कॉम्बाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास। जैसे कि एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है, जैसे कि H2SO4 एक कंपाउंड है, वैसे HCl एक कंपाउंड है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6 एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे डिफरेंट हैं, और उनके जो मास है, रेशियो है बाय मास, वो डिफरेंट है, मतलब डेफिनेट है। ठीक है, डेफिनेट मतलब सपोज H2O, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 U। ओके, यहाँ पर कितने एटॉम्स हैं? 2 एटॉम्स, मीन्स 1U इंटू 2U, 1U इंटू 2 मीन्स 2U इस टू ऑक्सीजन का मास कितना है? 16U, तो इस टू 16U, यू कैंसिल, टू इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और 8, 1:8। तो ये 1:8 जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आप इसको बिस्लरी से लो, बिस्लरी पानी से लो, फ्रेश वाटर पॉन्ड से लो, लेक से लो, स्ट्रीम से लो, गंगा से लो, ब्रह्मपुत्र से लो, जहाँ से भी लो। ठीक है, आपको पानी का जो पानी है आपको H2O ही मिलेगा। ओके, H2O प्लस अदर मिनरल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको H2O मिलेगा, मीन्स 1:8 रेशियो का ही मिलेगा। ओके, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स यू आर गेटिंग दी कंपाउंड। ओके, इसके बाद कंपाउंड हो गया और एलिमेंट हो गया। नाउ एलिमेंट के सब डिविजन्स। मेटल्स metals mean elements that have a tendency to lose electrons, are called metals। metals मतलब वो एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का।
आर कॉल्ड मेटल्स। लेकिन क्लास 8 में हमने मेटल्स का डेफिनेशन पढ़ा था। मेटल्स हार्ड, डक्टाइल, मेलिएबल, स्ट्रॉन्ग, हैव स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन क्या बोलते थे, सोनोरस, इसका हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्चर, इसके बाद और भी बहुत कुछ है, उन्हें हम बोलते हैं मेटल्स। लेकिन अभी मेटल का डेफिनेशन चेंज हो चुका है, जो कि है एलिमेंट्स दैट हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, copper, mercury, etc. Okay, these are metals. Now, non-metals. Non-metals. Non-metals का क्या डेफिनेशन है? सेम डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पर लूज की जगह पर गेन होगा। ओके, तो that have a tendency to gain electrons. ओके, तो नॉन मेटल्स किसे बोलते हैं? नॉन मेटल्स मतलब जो एलिमेंट्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का। ओके, इन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आर्गन, नियॉन, देन हीलियम, एटसेट्रा। ओके, तो ये है नॉन मेटल्स। इसके बाद metalloids. So what are metalloids? Metalloids means elements that show the properties of both metals and non-metals। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का ही जो प्रॉपर्टीज को शो करता है, मतलब दोनों मैटर के प्रॉपर्टीज ही इस वाले एलिमेंट में होता है, और इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड metalloids. For example, silicon, germanium, arsenic, selenium, tellurium, boron, etc. ओके, अभी हम बात करेंगे कॉम्पाउंड्स के सब डिविजन्स के बारे में, जो कि है ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स। Organic compound means compounds that are present in living organism। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंपाउंड हमें मिलता है या फिर प्रेजेंट होते हैं, और कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन, और या तो इसे हम
कार्बन से ले सकते हैं या फिर कार्बन से मिलता है। obtained from carbon, symbol is C, are called organic compounds. Okay, for example, ग्लूकोज, सिंबल क्या है? C6H12O6। ठीक है, इसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज सिंबल क्या है? C12H22O11। देन प्रोटीन्स भी है और अमाइनो एसिड्स भी हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये मतलब एक क्वेश्चन आता है कि HCl, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन के स्टोमक के अंदर मिलता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोला गया कि दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन HCl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है या फिर हम इसको कार्बन से ले सकते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, मीन्स नॉन मेटल है। ओके, नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, inorganic compounds, inorganic compounds, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन है compounds that are made up of elements obtained from atmosphere or Earth's crust. Okay, are called inorganic compounds. Okay, so जो कंपाउंड्स ऐसे एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जो एलिमेंट्स हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है या फिर अर्थ के क्रस्ट से। ओके, उन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके बाद नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड नहीं, एमोनिया NH3। अभी हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स का डेफिनेशन है, मिक्सचर्स का डेफिनेशन है impure substances made up of two or more pure substance combined together in any ratio by mass। ओके, तो मिक्सचर्स मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस जो कि दो या फिर दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस बने होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस
और कंबाइन होते हैं किसी भी रेशियो बाय मास में, ठीक है। लेकिन कंपाउंड होता है डेफिनेट रेशियो बाय मास और मिक्सचर होता है एन रेशियो बाय मास। नाउ homogeneous mixture, homogeneous mixtures, तो किन्हें हम homogeneous mixtures बोलेंगे? The mixtures or the mixture in which the components are distributed uniformly without throughout uniformly throughout and where there is no definite line of separation. Separation is called homogeneous mixture. Homogeneous mixture मतलब होमोजेनियस मिक्सचर मतलब वैसे मिक्सचर्स जिनमें क्या होता है कि कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरा मिक्सचर में, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर इज़ नो डेफिनेट लाइन ऑफ सेपरेशन। मतलब अगर हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, बीकर में हमने क्या लिया, हमने लिया पानी एंड सम सॉल्ट, ठीक है। हमने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद हमें कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा पानी में, ठीक है। लेकिन अगर हम पानी के सॉल्ट की जगह पर ऑयल लेंगे तो आफ्टर मिक्सिंग वी विल सी अनदर लाइन, ओके, इन विच दिस पार्ट विल बी ऑयल एंड दिस पार्ट विल बी H2O मीन्स वाटर। इट मीन्स कि ये जो लाइन हमें दिखा है एक्स्ट्रा लाइन वो है लाइन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और लाइन ऑफ सेपरेशन होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं दिखता लेकिन हेट्रोजीनियस में दिखता है। मतलब ऑयल एंड H2O का मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस, मतलब जहाँ पर डेफिनेट लाइन ऑफ सेपरेशन हमें विजिबल होता है, और होमोजीनियस मतलब H2 एंड सॉल्ट, ओके। तो एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल इज शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, फिर सॉल्ट इन वाटर, या फिर सोडा वाटर भी बोल सकते हो। सोडा वाटर में भी कोई डेफिनेट लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होता, और है कोल्ड ड्रिंक्स में भी, ओके, etc. These are all homogeneous mixture. Now heterogeneous mixture. Heterogeneous. Heterogeneous mixtures. तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है और क्या क्या चेंजेस हैं। द मिक्सचर in which the components are distributed non-uniformly and where there is a definite line
of separation. Definite line of separation is called heterogeneous mixture. ओके, तो डिफरेंस समझ सकते हो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है। कि हेट्रोजीनियस में जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली, और इस मिक्सचर में हमें डेफिनेट लाइन ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, इसके बाद मड। ओके, मड इन वाटर होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। इसके बाद और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हमें जानने होंगे, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।